So, hi everyone. Today we are going to the next problem statement of Hackerrank on Python programming. So today's problem statement is about nested lists. So let us understand today's problem statement is. So we are continuously solving the programs on Hackerrank. So let us start today's problem is. So given the names and grades for each student in a class of any student, store the nested list and print the names of any student having the same question. हमें एक क्लास के इन नंबर ऑफ स्टूडेंट का नेम और ग्रेड दिया हुआ है, हमें उसे एक नेस्टेड लिस्ट में स्टोर करना है और उसमें से सेकंड लोवेस्ट ग्रेड स्टूडेंट का नाम हमें प्रिंट करना है. इफ देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट विद द सेकंड लोवेस्ट ग्रेड, ऑर्डर देम नेम्स प्रिंट ईच नेम ऑन अ न्यू लाइन. अगर सेकंड लोवेस्ट ग्रेड मल्टीपल स्टूडेंट आते हैं तो हमें उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कर करके उनके नामों को हर एक न्यू लाइन में प्रिंट करना है. सो हियर वी आर गिवन इन एग्जांपल द वन ऑफ द स्टूडेंट नाम शाई, बीटा एंड अल्फा. शाई हैव 20 marks, 20 scores, beta has 50 scores, alpha has 50 scores. To show the first lowest score is 20, but we have to print the second lowest score. Then the second lowest score is 15, but there are two students who got second lowest grade, beta and alpha. So we are going to the arrange in alphabetical order. So alpha में A, beta में B. So A come first, so we have to print A, which is alpha, then B, which is beta. So this is the alphabetical order to print their names. Here input format is given also. फर्स्ट लाइन कंटेन इंटीजर. फर्स्ट लाइन में हमें एक इंटीजर मिलेगा जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, कितने नंबर स्टूडेंट. द टू एंड सब्सिक्वेंट लाइन डिस्क्राइब विच स्टूडेंट व्हाट यू मीन. फर्स्ट लाइन कंटेन स्टूडेंट. सो हमें दो लाइंस और चाहिए जिसमें हमें पहले लाइन में स्टूडेंट का नाम चाहिए और दूसरी लाइन में हमें उसका ग्रेड चाहिए. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए. जैसे सैंपल में इनपुट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है. तो फर्स्ट स्टूडेंट का नाम हैरी, उसका स्कोर 37.21. सेकेंड स्टूडेंट का नाम बेरी विच गॉट 37.21. टीना गॉट 37.2. आकृति गॉट 41. हर्ष गॉट 39. सो हियर फर्स्ट लोवेस्ट स्कोर इज 37.2 and the second lowest is 37.21. So there is two names, Berry and Harry. So B come first, so we have to print Berry first and the second name Harry. So let us now we have to solve the program. So here I am already written the code. How the program work, let us understand. First we have to initialize two variables. First one is dictionary and the second one is list. You have to initialize first. So after that we have to input name in a for loop and their score also, name and score, to make a list. After that we have evaluate that if a score in dict score dot append name, else dict score is equal to name. अगर स्कोर डिक्शनरी में लाई करता है तो हमें उसके स्कोर को डिक्शनरी में स्टोर कर लेना है उसके नाम के साथ. हर एक नाम के साथ उसके स्कोर को हमें एक डिक्शनरी में स्टोर करना है. उसके बाद इफ स्कोर नॉट इन ऑर्डर लिस्ट, अगर स्कोर ऑर्डर लिस्ट में नहीं आता है तो हमें एक नया ऑर्डर लिस्ट बनाना है और उसका स्कोर अलग लिखना है. उसके बाद x value gives the minimum order list. It gives the lowest score in the list. X contains the lowest score in the list, but we have to remove the first lowest score. So after that order list dot remove x. So we have to remove that lowest grade from the list. After that we got the second lowest score of the list. So x1 store the second lowest score of the list and
we have to sort the second lowest score in a alphabetical order. So we are going to use sorting method. Sorting helps to sort the name of the student in a alphabetical order. After that, we are going to print the each name of the student of the dictionary using for loop. So this is the program. Let us see and check our answer. So we are getting congratulations. All the sample test cases are passed. Now we have to submit the code and going to the next program. We are getting congratulations. Now going to the next program. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए। यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय फ्रेंड्स।